इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एवरीवन। खास तौर पर आवर डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल ही में दे हैव क्रॉस देयर लेटेस्ट एकेडमिक माइलस्टोन्स और अब अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के मुंतज़िर हैं। GIO तेलंगाना ब्रिंग्स टू यू एन एक्सक्लूसिव करियर गाइडेंस प्रोग्राम ताकि हमारे यंग स्टूडेंट्स के अपने करियर्स के इंतखाब के लिए एक वाज़ेह नक्शा खींचा जाए। प्रोग्राम के आगाज़ करते हुए I'd like to request बहन रयान अशरफ, तरबियती सेक्रेटरी GIO हैदराबाद, कि वो हमें अल्लाह की हिदायत कुरान की आयतों से मुनव्वर करें। बहन रयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमा ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم। सूरह कलम आयत 1 to 13। इनका तर्जुमा कुछ इस तरह है। नून, कसम है कलम की और उस चीज की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं। तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं और यकीनन तुम्हारे लिए ऐसा अज्र है जिसका सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं, और बेशक तुम अखलाक के बड़े मर्तबे पर हो। अन करीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुमसे कौन जुनून में मुब्तला है। तुम्हारा रब उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटके हुए हैं, और वही उनको भी अच्छी तरह जानता है वो जो राह रास्त पर हैं। लिहाजा तुम उन झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज ना आओ। ये तो चाहते हैं कि कुछ मुदाहिनत करो तो ये भी मुदाहिनत करे। हरगिज न दबो किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला बेवक्त आदमी है। ताने देता है, चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म ज़्यादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बदअमाल है, जफाकार है और उन सबसे अयूब के साथ बदअसल है। The translation for these ayats in English: Noon, by the pen and what they inscribe. You are not, O Muhammad, by the favor of your Lord, a mad man. And indeed, for you is a reward uninterrupted. And indeed, you are of a great moral character. So you will see, and they will see, which of you is the afflicted by the devil.
Indeed, your Lord is most knowing of who has gone astray from his way. He is most knowing of the rightly guided. Then do not obey the deniers. They wish that you would soften in your position so they would soften toward you. And do not obey every worthless habitual swearer and scorner going about with malicious gossip, a preventer of good, transgressing and sinful, cruel, moreover, and illegitimate pretender. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Sister Rayan Ashraf. Before moving on with our program, there's a small announcement. The participant limit on this program is 100, so the live link session has been shared on YouTube. You can join live there. It is time we invite our speaker for today's program, Janab Raza Ahmed Khan Sahib, Dean Student Affairs, Nawab Shah Alam Khan College of Engineering and Technology, Hyderabad. Janab Raza Ahmed Khan Sahib, please take over, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope I am audible. जी, आप audible हैं. हाँ, right, okay, fine. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. प्यारे बच्चों जो अभी 10th क्लास पास हुए हैं और आपने आगे फ्यूचर करियर के बारे में फिक्रमंद हैं कि कौन से फील्ड में उनको अपना करियर बनाना है, तो मैं आप सबका इस लेक्चर में इस्तकबाल करता हूं. Inshallah, we will be discussing what are the various options that are available to SSC pass students once they pass 10th class from any board, whether it is a state board or central board, CBSE, ICSE, or anything else. So we will have a session on the various options, and then at the end we may have some interactive session where if you have any questions, you may ask at the end. So generally the students are confused. This is the first step in their life where they are confused कि क्या लेना है, science में लेना है, maths है, उसमें biology है, तो which one to go for, or to take both of them. और उसके साथ कॉमर्स है, आर्ट्स है, वोकेशनल कोर्सेज हैं, जॉब्स हैं, और एक बहुत अहम स्टेप होता है कि एवरीबडी स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग कि ओके दीज स्टूडेंट्स विल डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, एंड देन सडनली स्टूडेंट्स को ये बहुत डिफिकल्ट फील होता है कि टू टेक ए मेजर डिसीजन ऑफ देयर लाइफ. रादर दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट ए स्टूडेंट टेक्स इन हिज और हर लाइफ. इसमें प्लानिंग की बहुत अहमियत है. बहुत एक हैरत होती है कि पीपल ऑफन स्पेंड मोर टाइम प्लानिंग ए वेकेशन rather than planning their career. तो हम कहीं अगर वेकेशन पे जा रहे हैं या फिर कहीं तफरी पे जा रहे हैं, तो जितना हम इंतजाम करते हैं, जितनी प्लानिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम होता है, वहां जाकर कैसे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो ये छोटा सा वेकेशन होता है, हम उसके लिए प्लानिंग करती हैं. लेकिन कैरियर which is almost like 40 years of working life, तो उसके लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती और हम जो है बगैर प्लानिंग के उस रास्ते पर निकल जाते हैं. So let us see कि what are the things that are important. Career decisions में इसलिए important है कि how you spend most of your awake hours for the next 40 years. जो हम next 40 years, मतलब अभी मिसाल के तौर पे अगर 15-16 के हैं, तो by the time you are 55 or 60, तो say like 40 years of productive life. तो इसमें के हम जो नींद से बेदार होकर जो वक्त गुजारते हैं, तो most of them we spend in our professional life, और उसी से रिलेटेड चीजों की एक्टिविटीज में हम बिजी होते हैं. तो दिस डिसीजन अब जो आप ये 10th क्लास के बाद लेते हैं, इट अफेक्ट्स योर अवेक अवर्स फॉर द नेक्स्ट 40 years. That is why it is so important.
and your opportunities for personal satisfaction and growth. माने अगर हम कोई कैरियर अगर अच्छा माने हमको जो पसंद है अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो we can have personal satisfaction, gratitude और एक अच्छी फीलिंग आती है, and then we enjoy our work, our studies and so on, and then we normally grow in that field. Your ability to meet your family's need like housing है, medical है, college है, इस ये जो अखराजात होते हैं तो कैरियर में दोनों चीजें आती हैं, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन ग्रोथ एंड देन वी हैव टू मीट our family's needs also. तो उसमें जो है खाना पीना है, रहन सहन है और सेहत वगैरह के मसाइल हैं, हॉस्पिटल के अखराजात हैं, बच्चों के कॉलेज की फीस है, तो ये सारी चीजें हम ऐसा प्रोफेशन या ऐसा करियर चूज करना जिससे कि इसमें भी सहूलत हो. And your ability to eventually retire with the financial resources to enjoy that you enjoy it. तो माने इस तरह से रिटायर होना हम के कुछ हमारे पास सेविंग हो जिससे कि हम जो है अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकें. And this is how we spend our hours in our lives. Grade 1 to 12 में approximately we spend around you say 12,000 hours. तो usually ये 12 classes तक grade 12 तक अभी तो अब 10 पास हुए हैं, लेकिन ग्रेड 12 तक अगर पास हो जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 आवर्स ऑफ स्टडीज हम स्पेंड कर चुके हैं इसमें. कॉलेज लाइफ में अगर आप देखेंगे तो कॉलेज लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली 4,000 आवर्स एंड देन द वर्किंग लाइफ, वर्किंग द आवर्स दैट वी स्पेंड ऑन वर्किंग, ये जो हम करते हैं तो 90,000 घंटों का ये जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 90,000 आवर्स जो है हम स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ में. तो ये फिगर बताने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा टाइम, ह्यूज पार्ट ऑफ अवर लाइफ, दिस इज अवर लाइफ. सी वर्किंग जो हमारा यहाँ पर हम ये ग्राफ के जरिए से जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इतना अमाउंट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन अवर प्रोफेशन, ऑन अवर कैरियर दैट वी आर गोइंग टू चूज नाउ. तो ये बहुत अहमियत है कि लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा, बहुत ज्यादा हिस्सा हमारा ये वक्त ये इसमें जाएगा. तो और वो कौन सी चीज डिसाइड करती है, ये कॉलेज डिसाइड करता है कि मतलब आप ये कॉलेज जो लेंगे, जो प्रोफेशन डील करेंगे, एंड दिस विल डिसाइड द कैरियर दैट यू विल बी परसुइंग फॉर द नेक्स्ट 40 years. ओके, वाई प्लानिंग इज डिफिकल्ट. लोग क्यों इसको मुश्किल समझते हैं, क्यों प्लानिंग करना नहीं होता? तो इजी टू प्रोक्रेस्टिनेट. तो ये होता है कि भाई चलो ठीक है, मैंने बाद में देखा जाएगा, अभी तो बच्चे को डाल दो किसी में, बाद में देखा जाएगा. एंड पेरेंट्स फेल इनटू देयर जॉब्स. पेरेंट्स डिसाइड कर देते कि भाई देखो तुमको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तुमको ये करना है. स्टूडेंट्स को ये होता है कि टू स्केरी टू थिंक अबाउट, मेरे को मालूम ही नहीं है, मैंने लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर डराव नहीं दिखता, ऐसा दिखता कि मैं लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिन करना है तो कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, इंजीनियरिंग करना है तो विल इट बी डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, कितने सेमेस्टर में मैथमेटिक्स रहती है, एंड सो ऑन. टू बिजी, नो मोर होमवर्क, मैंने अब बहुत ज्यादा बिजी हो गए, अब जैसा है वैसे चलेगा, अब और होमवर्क करना नहीं होता हमसे, तो जो भी कैरियर होगा हम उसको चूज कर लेंगे. एंड देन डोंट नो वे टू बिगिन, कहाँ पर शुरू करना है वो मालूम नहीं है, तो देयर इज नो बिगिनिंग एट ऑल. तो जहां पर भी जैसे भी दुनिया लेके जाती है, दोस्त सहेलियां जहां पर एडमिशन लिए हम भी ले लिए, एंड डोंट सी द वैल्यू, उसकी अहमियत नहीं समझ में आती कि भाई क्यों इतना परेशान हुआ जाए, सिर्फ कैरियर तो चूज करना है ना, तो चलता है उसके बगैर भी. उसका रिजल्ट क्या होता है? इट इज यूजुअली पुअर चॉइसेस एंड फ्रस्ट्रेशंस. तो उसमें ये होता है कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि माय सन जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड ही डजंट हैव ए क्लू व्हाट ही वांट्स टू डू, मे बी फोरेंसिक्स, मे बी आर्ट. तो ये एक पेरेंट का फीडबैक है कि वो ग्रेजुएट कर लिया है स्टूडेंट, लेकिन ही स्टिल डजंट हैव ए क्लू कि वो करना क्या चाहता है. हो सकता है कि फोरेंसिक्स में जाएगा, या हो सकता है कि आर्ट्स में जाएगा. ग्रेजुएट होने के बाद अगर इंसान सर्टेन नहीं है तो देन यू कैन इमेजिन कि वो व्हाट काइंड ऑफ जॉब ही विल बी लैंडिंग इनटू. एक सेकंड रेस्पॉन्स है, माय डॉटर इज अ सोफोमोर इन कॉलेज एंड शी हेट्स हर मेजर. शी हैज टेकन अकाउंटिंग एज हर मेजर एंड नाउ शी हेट्स इट. So is it the time to hate a subject when you are already a sophomore in the college, and then
you have spent time studying it. She is changing majors but doesn't know what to choose. अगर change करने का option है भी तो she doesn't know what to choose from. So again it's a tragedy. मैंने already studies शुरू हो गए हैं and then she doesn't like her. So that means at least one more year of college that we cannot afford. तो parent बोल रहे हैं कि एक साल और लगेगा इसमें जो हम afford नहीं कर सकते. एक response है कि now that I have a college degree, I need to think about a career. I majored in marketing, but I'm not sure that that's what I want to do. मार्केटिंग में कर लेने के बाद ये कैंडिडेट का एक फीडबैक है कि मेरे पास डिग्री है, नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट ए करियर. तो अब वो सोच रहा है कि हालांकि ही हैज ऑलरेडी डन ए डिग्री इन मार्केटिंग, ऑब्वियसली द कैरियर शुड बी इन मार्केटिंग, बट प्रोबेबली ही डजंट लाइक मार्केटिंग टू बी ए कैरियर फॉर suitable for him. So that is too late for a person to decide on a degree, on a career option after he or she has graduated. Yes, somebody is raising the hand. Is there any issue? Can all of you hear me properly? Yes, you're audible. Yeah, okay, fine. I'll continue. Then one more response. The feedback from one of the parents is, one of the students is, I hate my major, but switching involves 2 more years of college. My parents would kill me. I'll cut it out. Maybe I'll learn to like it. तो एक मजबूरी में ले लिए हैं, लेकिन अगर मैं अब चेंज करूंगा तो प्रोबेबली पेरेंट्स जो है बहुत खफा होंगे. तो जो है मैं हो सकता है कि ऐसे ही जो भी वो कर लेता हूं, मैं शायद बाद में इसको पसंद करने लगूंगा. तो अगेन दिस इज नॉट ए गुड वे टू डू इट. आई विश आई हैड known 4 years ago what I know now. अगर मेरे को 4 साल पहले मालूम होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता. I would have taken career and college planning more seriously. My major was easy and fun, but now I cannot get a decent job. तो ये बाद में जाकर मालूम होता है कैरियर में, तो देर हो जाती है. तो बेहतर होता है कि अगर पहले से मालूम हो जाए तो उसमें सहूलत होती है कि कौन सी फील्ड चूज की जाए. Okay, there are so many free online resources, that are available for students to take help from. So to clarify your interest, whether you fit in that within that career or not, so there are websites, online resources that will help you out to compare your personal skills and strengths against required by various careers. Like for example, if you want to go for medical field, so there are some sites that will help you in identifying whether you have those required skill sets or not, to determine which careers offer the most opportunity. So kahan par aapke paas zyada opportunities hain. Like for example, if you go for engineering, maybe you have got more prospects for jobs and so on. तो इसी तरह टू डेवलप योर लिस्ट ऑफ कैरियर्स फॉर कंसिडरेशन. तो एक बाज वेबसाइट्स हैं, पेड वेबसाइट्स हैं बाज, इसमें दे टेक टेस्ट लेने के बाद दे गिव ए कंप्लीट रिपोर्ट. लाइक फॉर एग्जांपल 35-40 पेजेस की रिपोर्ट आती है उसमें. तो उसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज आते हैं, माने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड देन दे विल प्रोबब्ली लिस्ट 2-3 कैरियर्स दैट आर मोर सूटेबल फॉर यू. सो इसके भी कुछ वेबसाइट्स हैं. To learn about the nature of work, education requirements, job outlooks and earnings, etc. तो ये सब ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. थोड़ा सा होमवर्क करने पर आपको मिलेगा. इसमें पेड वेबसाइट्स वगैरह हैं, मगर वी डोंट वांट टू प्रमोट इट एनी ऑफ दोज वेबसाइट्स. इट इज फॉर यू टू गो एंड लुक फॉर दोज वेबसाइट्स ऑन योर ओन. this is very important, is talk to people. लोगों से बात करने से जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है. Talk to people who are already into the field. Like for example, parents, friends, माने वालिदैन के जो दोस्त होते हैं वो कोई पर्टिकुलर फील्ड में है, कोई MNC में जॉब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई वकील हैं, कोई और पेशे से ताल्लुक रखते हैं, कोई आर्म फोर्सेस में हैं. तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि अबाउट हाउ इज देयर कैरियर, how is the life in that particular field. हमको ऐसा दिखता है फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर शायद बहुत मजे करते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं. नॉट ऑल डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है. अभी हम कोविड से गुजरे हैं, जब देख रहे थे कि they do a lot of hard work
and then not all doctors earn a lot. तो ऐसी चीजें हैं, तो ये हमको इंटरेक्शन से, लोगों से मुलाकात से, उनसे फीडबैक लेने से मालूम होगा. फ्रेंड्स, पेरेंट्स, हमारे दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके पेरेंट्स से हम बात कर सकते हैं. Acquaintances from life's interaction, example teachers, dentists, store managers. तो आप टीचर्स से अपने मशवरा ले सकते हैं. अपने पड़ोस में कोई मैनेजर हैं, कोई डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, स्टोर मैनेजर्स हैं, एमबीए हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, इनसे मशवरा ले सकते हैं कि व्हाट कैरियर्स आर गुड. और कैरियर डे प्रेजेंटर्स, ये एक्चुअली बहुत अच्छा वेस्ट में कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास भी बाज़ स्कूल्स में है कि जब बच्चे फाइनल 10th क्लास में होते हैं तो उनके लिए कैरियर डे रखते हैं. कैरियर डे में होता ये है कि माने दे कॉल पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स, और वो लोग आकर अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं. दे कम एंड सिट इन ए बिग हॉल इन वेरियस टेबल्स, एंड देन you go and talk to them, interact with them. तो उसमें बहुत अच्छा आपको एक आइडिया मिलता है कि what are the various fields that are available to students. Like for example, एक डेस्क पे आप जाएंगे तो आईटी प्रोफेशनल्स होंगे, एक डेस्क पे जाएंगे तो सिविल इंजीनियर होंगे, दूसरे डेस्क पे मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, तीसरे डेस्क पर डॉक्टर्स होंगे, चौथे पांचवें डेस्क पर डेंटिस्ट होंगे, एंड देन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, एंड देन लॉयर्स, एंड सो ऑन. So they try to bring as many as people as possible from different spheres of life. And then you have got people you can talk to, volunteering and internships, job shadowing, and so on. So you get a wide variety of opinion from people. Okay, what are the different options that are available to people. इसमें यह है कि टिपिकल जो हम एडवाइसेस लेते हैं वो है, इट इज फ्रॉम टीवी. so there is a big difference between TV dramas and real life. अक्सर ये दिखता है कि ग्लैमरस लाइफ है और बहुत माने हाई टेक वगैरह इस तरह का. तो माने यहाँ से हमको थोड़ा सा कभी गाइडेंस मिलता है, कभी मिस गाइडेंस होता है. तो ये टिपिकल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमारे लिए, वो एक टीवी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. देन फ्रेंड्स, दे ऑल नो व्हाट साउंड्स कूल, but unless they have proactively used the career or college tools available, they are probably not a knowledgeable source of information. वो बाज़ बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे उनको मालूम है और बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये डिसाइड कर लिया हूँ. they try to behave like say know it all type, कि नहीं मुझे मालूम है, मैं इसका होमवर्क कर लिया हूँ, मैं I'm going for this field. So if they have done some counseling sessions or career or college tools they have used, then that is okay. But if they are doing it without any source of information, then it is very risky to follow them. ये peer pressure में एक फैक्टर ये भी होता है कि एक दोस्तों के साथ हम भी डिसाइड करने लगते हैं वो कैरियर में. And then life's interactions. So okay, you have used the service of dentists, pharmacists, teachers, etc. But do you really know what it is like to do their job? देखने में ऐसा दिखता है कि टीचर बहुत अच्छा माने पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ है उनकी, उनको बस आना है, पढ़ाना है, एग्जाम्स तो हमको लिखना है. इसी तरह फार्मासिस्ट का अच्छा एसी में बैठा है और माने द ओनली थिंग इज जस्ट गिविंग द मेडिसिन. डेंटिस्ट है बस एसी में है आराम से. तो ये देखने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बट हाउ इज देयर जॉब, हाउ इज देयर लाइफ, तो ये हमको मालूम है कि नहीं है. तो दूर के ढोल सुहाने, तो कभी ऐसा होता है कि करीब आए तो माने वही सताने लगते हैं कि बहुत ज्यादा शोर होता है. तो इसीलिए वी नीड टू इंटरैक्ट विद पीपल whom we come across in our daily lives. And then parent, if they are a great source, if your parents' careers happens to be the right one out of the 700 possibilities for you, so that would be the best thing. Like for example, एक डॉक्टर हैं तो उनके बच्चे अगर मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, that would be the best thing. इसी तरह लॉयर हैं तो उनके बच्चे लॉयर, if they want to become lawyer, then that will be really helpful if they want to become. Civil engineer हैं, if their children want to become civil engineer, then very good. So ऐसे बात प्रोफेशंस हैं जिसमें अगर पेरेंट्स का प्रोफेशन अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो that is really helpful for the students. And then now coming to what are the career options available after 10th. ये जो हमारा आज का टॉपिक है, exactly coming to that point. ये हम जो बात कर रहे थे, that was background thing. So the first career option is pursuing higher secondary education. So by that you already might be guessing it, intermediate. Then professional courses, so probably polytechnic courses,
Third, selecting some vocational courses, so that involves intermediate vocational courses, ITIs, and so on. Explore some skill development courses. There are so many skill development courses, certificate courses that are on offer. Consider some diploma courses. Like for example fashion designing and so on. We will see into it. ये मैं जितने बता रहा हूँ इस पे हम डिटेल में देखेंगे in next few slides में. And entrepreneurship है and consulting a career counselor. Number one is pursuing higher education, higher secondary education. So continue your education by enrolling in a higher secondary school or college. So 11th, 12th, yeah, intermediate first year, second year, with the subjects option as science, commerce, arts. So these are the only three options that you have got if you are going for secondary, higher secondary education. So intermediate में you can go for MPC, BIPC, MEC, CEC, HEC, and you can have a combination of M BIPC. So mathematics along with biology and physics, chemistry. Probably this is a difficult option, but some students who want to keep their options open, whether they want to go for engineering or medicine, can go for M BIPC. इसी तरह higher secondary education provides a strong foundation for further studies and opens up various career opportunities. तो जो बच्चे इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो उनके पास और ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं अपने करियर के ताल्लुक से. The second option would be to go for a professional course, enroll for a professional diploma course in engineering, architecture, dairy industry, or biomedical engineering, etc. So probably polytechnic courses are the best courses for this. They are 3 years diploma courses right after 10th class. And polytechnic courses provide a strong foundation for further studies in engineering or related fields. What they do is 10th class. After 10th class, there is a 3 years polytechnic course. So 10 plus 3 is 13 years. And then if they want to go for engineering, they can get admission to the second year. So they call it as lateral entry admissions. So engineering is usually 4 years. So when they take admission in second year, so it is 3 years. So 10 plus 3 is 16 years of studies. And if you go from the intermediate stream also, it is 16 years. So it is 10 years plus 2 years intermediate and then 4 years of engineering. So 10 plus 2 plus 4 is 16. And here 10 plus 3 is 16. So both ways, but if somebody is planning to go for engineering, so probably polytechnic is a better stream to go for engineering because students study 3 years engineering in polytechnic at 10 plus 3 level, and whereas in intermediate stream they don't study engineering at all in intermediate level, 10 plus 2 level. So they do all the engineering courses in the engineering course. और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक से आते हैं तो 3 साल पॉलिटेक्निक में करते हैं वो लोग, फिर 3 साल इंजीनियरिंग में करते हैं, तो दे हैव ए 6 years engineering background. Then polytechnic courses they also provide a strong foundation. So we have a experience that those students who are coming from polytechnic streams have better strong background of engineering rather than students coming from intermediate streams. And then prospects of job immediately after professional diploma are very good. There are so many advertisements which says that degree diploma in engineering in certain fields are eligible to apply for certain jobs. So they have got after 10 plus 3, 13 years of education, they are ready for the jobs. Whereas when we go for some other fields, unless you get a degree, the job opportunities are very less. बहुत कम रहते हैं. And now there is a stream called vocational courses. So you may enroll for a vocational course if you have a particular interest or aptitude in a particular specific field. These courses provide practical skills and training for specific industries such as information technology, hospitality, automotive, healthcare, graphic design, electrician, refrigeration and air conditioning, plumbing. So ये जो section of courses हैं इनको intervocational courses बोलते हैं, and these are not available in all intermediate colleges. ये particular colleges होते हैं, जैसे एक चंचलगुड़ा college is one such example, जहाँ पर not all courses, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि refrigeration, air conditioning होंगे, computer science होगा एक वहाँ पर, शायद वो information technology उसको बोलते हैं, एक automotive होगा. तो इस तरह के कुछ courses, vocational courses ऐसे कई जगह
जगह पर कई कॉलेजेस ऑफर करते हैं। तो इट इज ए गुड आइडिया कि 2 साल का कोर्स करते हैं। अगेन जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल की डिप्लोमा कोर्स है, ये 2 साल का इंटर वोकेशनल कोर्स है। अगेन इसमें ये करने के बाद भी जॉब्स के लिए इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं, क्योंकि इसमें यू आर इक्विप्ड विद स्किल्स फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट और फर्दर स्टडीज इन स्पेशलाइज्ड फील्ड। जो बच्चे वोकेशनल कोर्स कर इसमें इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो उसके बाद ये लोग दे आर एलिजिबल फॉर engineering as well. So this is also a very good option. And then the next option is explore skill development programs. Skill development programs kya hai? These are there are numerous skill development programs available that focus on enhancing specific skills. These programs often offer certificates in areas such as computer programming, digital marketing, web design, language proficiency, and entrepreneurship. तो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, ये 6 months to 2 years के, तो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें इफ यू गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम देम, then developing in demand skills can provide you with a competitive edge in the job market and increase your employability. These courses can be done with diploma, with vocational courses, with degree, or they can be done independently as well. तो ये जब अगर कोर्सेज कर लेते हैं तो इससे एक एज मिलता है ओवर अदर्स। तो इसमें यूजुअली there are so many things we get, training, experience, ability, growth, advanced training, knowledge, learning, and competence. So it's a need of that students keep developing their skills throughout their learning periods. And then consider some diploma courses. एक polytechnic courses हम देखे भी, एक उसमें भी the degree that is awarded is diploma, but here we are talking about some specific diploma courses which are very short in term. Diploma courses are an alternative to traditional higher education, providing specialized knowledge in specific fields. So you can explore the diploma programs in areas such as engineering, hotel management, fashion designing, multimedia, or event management. और इसके अलावा लाइक शॉर्ट टर्म कोर्सेज लाइक ऑटोकैड है इंजीनियरिंग में, तो इफ यू टेक ए डिप्लोमा इन ऑटोकैड इट इज अप्रॉक्सिमेटली 2 to 3 months and then it can vary up to 6 months as well. So then you are readily available for you are ready for the job. So diploma courses usually have a short duration compared to a full-fledged degree and can lead to immediate employment opportunities. तो इसमें यही फायदा होता है कि आप एक छोटा सा कोर्स करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, आप करें और आपको फौरी से यू आर रेडी फॉर द जॉब। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन है, ऐसे बहुत सारे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेरियस बोर्ड्स जो ओके फाइन। then the last option is entrepreneurship. इसमें एक जो हम various options अभी देख रहे थे उसमें entrepreneurship is one of those options. If you have the passion for starting your own business or have innovative ideas, you can consider is exploring entrepreneurship. Yeah, this is also possible after 10th class. Yes, you can't believe it, but there are students who go for entrepreneurship after 10th class as well. Although that is not recommended in our society, हम लोग इसको recommend नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास passion हो इतना के बने they are not interested in pursuing higher education, तो वो part time आप जैसे कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स से ऑनलाइन कोर्सेज से आप अपना स्किल्स बढ़ाते रहिए, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहिए, लेकिन यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल. तो दिस पाथ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क. तो ये बच्चों में बाज वक्त पेरेंट्स से आता है, बाज वक्त जो माहौल में रहते हैं वहां से आता है. तो एंड सम स्टूडेंट्स हैव ए टेंडेंसी ऑफ डूइंग इट, माने उनको एक चाइल्डहुड से एक रहता है उनके अंदर एक टैलेंट के, वो दे आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स. सो यू कैन स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम और ए गैप इन द मार्केट एंड डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान टू एड्रेस इट. लाइक फॉर एग्जांपल अभी आजकल फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत अच्छा चल रहा है, तो यू कैन थिंक अबाउट कन्वर्टिंग नॉर्मल व्हीकल्स इनटू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स or electric vehicles, or like for example solar energy se providing energy to the households. So like this there are so many things that students can think about, and then if they have anything they can go for entrepreneurship. Many successful entrepreneurs have started their ventures at a very young age. It's an encouragement to students who are thinking of starting their own setups. And then finally consult a career counselor. Still, if you are confused, if you want to
have a proper one-to-one counseling session. You can meet any career counselor. It's always beneficial to seek guidance from a career counselor or mentor who can help you explore various career options based on your interests, skills, and aptitudes. They can provide personalized advice and help you make an informed decision about your future. हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, like for example they come undecided which branch to take admission in engineering college. Like for example, we have got so many branches of engineering, like civil engineering, mechanical, electrical, electronics, computer science, then computer science, IT, information technology, then computer science with artificial intelligence, then computer science with cyber security, then computer science with data science, and so on. So students are confused to which field. एंड यूजुअली जो बच्चे सवाल करते हैं, बच्चे या पेरेंट्स, वो ये सवाल करते हैं कि कौन सा इजी है और किसमें ज्यादा अच्छे स्कोप्स हैं. तो ऐसा नहीं होता. मतलब इसमें मैंने यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट फील्ड एंड देन टेक इंटरेस्ट इन दैट फील्ड एंड देन यू नीड टू मास्टर दैट कोर्स. उसके बाद आपको इजी भी लगने लगेगा वो, एंड देन यू विल मास्टर इट एंड देन यू विल हैव वेरी गुड प्रोस्पेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. I am coming towards the conclusion. तो इसमें ये है कि like for example career options में these are मैं summary में अगर आपके सामने रखूंगा अभी जो हम पिछले slides में बात कर रहे थे. So after 10th class, number 1 option is going for 11th and 12th with science, commerce and arts. Number 2 option is going for diploma courses. जैसे डिप्लोमा में कई चीजें हैं. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा जैसे ऑटोकैड है फॉर एग्जांपल, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म है, एजुकेशन है, फोटोग्राफी है, साइकोलॉजी है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, फाइन आर्ट्स है, इंग्लिश है, फैशन डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब टेक्नोलॉजीज है, वेब डिजाइनिंग है, गेम डिजाइनिंग है, बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी है, फूड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेकअप एंड ब्यूटी है, इवेंट मैनेजमेंट, business management, marine engineering, animation, textile designing, leather designing, and textile engineering. ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं. इसके अलावा और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट और द यूनिवर्सिटी एंड योर प्रॉक्सिमिटी टू दैट प्लेस. कितने नजदीक हैं आप, कितना अफोर्डेबिलिटी देती है आपकी, जाकर वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं. There are so many polytechnic courses. यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं. डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अभी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन एनिमेशन आर्ट डिजाइनिंग, इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर. We have got diploma polytechnic courses in engineering, civil engineering, mechanical engineering, computer science, artificial intelligence and machine learning. So there are so many polytechnic courses that are available to the students these days. इसी तरह पैरामेडिकल कोर्सेज हैं. पैरामेडिकल में डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंस है, रूरल हेल्थ केयर है, लैब टेक्नीशियन है. अभी आपके सामने जब बता रहा था मैं कि पार्ट टाइम बहुत छोटे 2 months to 6 months के कोर्सेज हैं. पैरामेडिकल नर्सिंग है, फिजियोथेरापी है, एक्सरे टेक्नोलॉजी है, ईसीजी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, डेंटल मैकेनिक्स एंड फार्मेसी. इसी तरह आईटीआई कोर्सेज हैं. आईटीआई के कोर्सेज में और पॉलिटेक्निक कोर्सेज में ये डिफरेंस है कि आईटीआई के कोर्सेज 2 years के हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेज 3 years के हैं. आईटीआई कोर्सेज में थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है. पॉलिटेक्निक कोर्सेज में थ्योरी ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होता है. प्रैक्टिकल भी रहता है लेकिन कंपेयर टू आईटीआई वो कम होता है. इसमें थ्योरी एग्जाम्स बहुत इजी होते हैं आईटीआई में. तो इलेक्ट्रीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इंश्योरेंस एजेंट, डिजिटल फोटोग्राफर, फैशन डिजाइनिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग आर्टिस्ट एंड सो ऑन. इसी तरह वोकेशनल कोर्सेज हैं. वोकेशनल कोर्सेज में मैं आपके सामने भी बता रहा था, जैसे जूनियर कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं. ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल स्पोकन इंग्लिश, mobile repairing course, commercial practice, stenography, leather technology, mechanical engineering, 3D animation and so on. तो ये कुछ courses हैं जो 10th class के बाद various fields में available हैं. इसके अलावा you have got entrepreneurship, अपनी own business अपना start करने का. तो अगर आप उसको नेटशेल में देखेंगे तो लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट 1 is science, 2nd is commerce, 3rd is arts and humanities, 4th is vocational courses, 5th is instructor. यहाँ पर एक मैंने ये अलग अलग तरीके से ये लोग प्लेस करे हैं इसको बताने के लिए स्टूडेंट्स को. तो if you go for science, the options that are open is engineering, medicine, architecture, biotechnology, pharmacy. If you go for commerce, CA, chartered accountant, BCom, CS is company secretary,
BBA, Diploma in Banking and Finance, Company Secretary CS is next to CA, बहुत important post होता है ये भी. Arts and humanities में law, languages, fine arts, social work and so on. Vocational courses में ITI, polytechnic, vocational training and so on. And then instructors, if you want to go for teaching, pre-secondary, post-secondary teacher, post-secondary educator, education administrator, curriculum developer, school counselor and so on. And then if you look at from another perspective, so it is arts, commerce, science. So they are leading to, arts will lead to no, not necessarily, but they have got after 10th options में ITA courses भी हैं, engineering diplomas हैं, non-technical diplomas हैं. तो इस तरह के कई वेरियस ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं. इसके अलावा अगर आप नेट के ऊपर अगर सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड सो मेनी चार्ट्स ऑफ दिस टाइप. तो इसमें जो है मैंने आई इनिशियली थॉट ऑफ प्रेजेंटिंग इट टू यू इन दिस वे, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए आई ट्राई टू मेड इट सिंपलर. व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. तो यहाँ पर भी वैसे ही है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, LIC एजेंट, आर्मी, नेवी, फाइन आर्ट्स, IT. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये भी अगर चाहे तो आप इसको रिफर कर सकते हैं. नेट के ऊपर ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है. And now, finally coming to the end of it, what are the steps in choosing the right career? ये बहुत important है. मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दें. Number one is to have a informed decision. What you need is information. So information, you try to gather information through internet, web surfing. You spend some time because you know it is worth spending this time on your career. rather than बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप ये टाइम इस पे स्पेंड करें. तो इसमें इंटरनेट, वेब सर्फिंग, दूसरी चीजें करते रहते तो थोड़ा सा उसको ब्रेक लीजिए, अपने कैरियर की तरफ देखिए कि व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल. यूट्यूब वीडियोस हैं इसमें. जैसे मैं अक्सर आई कीप टेलिंग द स्टूडेंट्स हु कम टू college for finding out what are the various fields that are available. तो इसमें मैं ये बोलता हूँ कि like for example if you're interested in science, maths and biology, or it is very difficult for you to decide to which stream to go for. तो इसके आप YouTube videos देखिए कि future scopes of BPC, future scopes of MPC, इस तरह से आप find out करिए तो आपको बहुत सारे videos मिलेंगे. वो थोड़े से videos देखिए, आप पूरे तो videos देख नहीं सकेंगे, 4 से 5 मिनट के वीडियोस होते हैं, वो देखिए तो it will give you an idea, it will open the window for you. And then you talk to your parents, they are the best source of information and support available to a person. Then talk to friends, seniors, relatives, neighbors and people you meet in the mosque and so on. So you know, से आप ये 3-4 चीजों से आप you try to gather information. The second thing to look for is job advertisements. तो ये क्या होता है कि आप जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं, जॉब रेडी है और इस तरह से दूसरे वेबसाइट्स जॉब्स के हैं, उस पे जाकर लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया होना चाहिए विच टाइप ऑफ इंजीनियर यू वांट टू बी, सिविल, मैकेनिकल, कौन सा बनना चाह रहे हैं आप. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी ए डेंटिस्ट, यू वांट टू बी ए मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो आप वो फील्ड के जॉब एडवर्टाइजमेंट्स थोड़ा सा देखिए. मैंने इट इज टू अर्ली फॉर ए 10th क्लास स्टूडेंट टू लुक इनटू ऑल दिस थिंग्स. ये स्पेशली यूजफुल होगा 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी आप अगर जब डिसाइड कर रहे हैं तो इफ यू वांट टू हैव ए एज ओवर अदर्स, तो थोड़ा सा आप देखिए. नॉट वेरी रिकमेंडेड फॉर यू बट it is advisable for you. And then narrow down the choices. आप उसमें वो करिए कि मतलब अब मेरे को जो है मैंने पहले CA भी ऑप्शन था और फिर मेडिसिन भी ऑप्शन था, now it is engineering is the option. So you narrow it down to a subject and then look for at the syllabus and visit colleges. आप देखिए कि मतलब MPC ले रहे हैं, BPC ले रहे हैं या CEC ले रहे हैं, तो क्या उसमें सब्जेक्ट्स में क्या है. अगर मैथ से डर है तो मैथ्स लेने से पहले देखिए. साइंस से डर है, बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी ऑप्ट करने से पहले उसको देखिए, उसका सिलेबस को. एंड देन विजिट कॉलेजेस एंड decision on course and college. You decide on the course and the college, what course you want to study and in which college. So based on your visit to the college, you're seeing the syllabus, you're meeting people, and then getting to know more about both of them, course and the college. And then the last thing is do istikhara.
इसमें क्या होता है, डिसीजन लेने के बाद इस्तिखारा। एक हमारे पास गलतफहमी ये होती है कि दो ऑप्शंस में, वो कॉलेज में लूं वो कॉलेज में लूं, इस्तिखारा। ऐसा नहीं, यू डिसाइड अबाउट अ कॉलेज बेस्ड ऑन मैंने आपका ये जो कलेक्ट करें आप इंफॉर्मेशन, उसके उससे घर के करीब कितना है और कितना वहां पर सपोर्ट है टीचिंग फैकल्टी का, तो ये बेसिस पे आप अपना डिसाइड करिए एंड देन डू इस्तिखारा। इस्तिखारा का बहुत आसान तरीका है, 2 रकात नमाज पढ़ना है और फिर जो है उसकी एक इस्तिखारा की दुआ है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इस्तिखारा दुआ तो वो दुआ आ जाएगी। उसमें सिंपली वी आर आस्किंग द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू गाइड अस के, बिकॉज वी आर सीकिंग द हेल्प फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर द अननोन। हमारा फ्यूचर क्या होगा हमको नहीं मालूम है, अल्लाह को मालूम है। तो वी आर सेइंग कि अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत अता कर, दीन दुनिया और आखिरत के लिहाज से इसमें भलाई है तो इसको मेरे हक में कर दे, वरना मुझे वहां ले जा जहां मेरे लिए बेहतर आई है और फिर मुझे उस पर राजी कर दे। तो बहुत अच्छी पावरफुल दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मेजर डिसीजन करने से पहले हमको ये दुआ सिखाई है, तो वी शुड बी डूइंग दिस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो दिस इज माय लास्ट स्लाइड, टिप्स फॉर सक्सेस। दिस इज माय लास्ट स्लाइड बिफोर आई ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। तो I would advise all of you that when we are planning for our careers, so to be successful, we need to plan in such a way that we are successful in this life and the hereafter. तो सबसे पहले है नमाजों की हमको पाबंदी करना चाहिए। हमारे टाइम टेबल में नमाजें खुशू के साथ अदा होनी चाहिए 5 वक्त की। कुरान डेली पढ़ना चाहिए विद ट्रांसलेशन एंड तफसीर। मेक इट ए स्लॉट के डेली हम इसमें इसे पढ़ें। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, डू अस्कार। मॉर्निंग और इवनिंग के अस्कार हैं जो अल्लाह के जिक्र है मसनून, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करके बताया है कि कैसे किया जाता है। बिफोर स्लीपिंग है, आफ्टर ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं, फर्ज नमाजों के बाद। इसमें थोड़ा सा इस्लामिक लिटरेचर है, जैसे सीरत है, सहाबा की सीरत, सीरत सहाबा है, सीरतुल अंबिया है, फिक्ह है, थोड़ा थोड़ा रोजाना रीड करने की हमको आदत होनी चाहिए। Attend weekly Islamic programs. GIO conducts a lot of Islamic programs in almost every locality of Hyderabad. Volunteer for some Islamic activities. जो उनके programs होते हैं, you become a volunteer for that and then participate in it. Start a daily 10-minute Islamic class at home. Yeah, this is very important that all of you should start a small 10 minutes class at home, जिसमें आप जो है कुरान या सीरत या सहाबा से जो some authentic book, you take it out and then you read it out to your family and then make a timetable with the right balance. इसमें यह है कि आपके स्टडीज के लिए भी वक्त हो, उसमें आपकी प्रेयर्स और कुरान के लिए भी टाइम हो, लिटरेचर पढ़ने के लिए टाइम हो, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टाइम हो, पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम हो। तो ये एक बैलेंस हमको टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। And then with this I'll stop here, wishing you all a very successful career in both the worlds. May Allah subhanahu wa ta'ala be our helper and guide, and may all of you prosper in your lives. Jazakumullah khairan. I stop here and then I'm open to questions. Yes. इसमें कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं। To expand the way of thinking, which field is best? बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी फील्ड, any field that is of interest to you, you try to study it, get involved in it, take a dive by reading more and more books, try to get a specialization in that field. It will open the way of thinking for you.
जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, see, thinking is something that you need to practice. वो क्या है, how it comes, जैसे कुरान में कई चीजों में बोलता है कि you need to ponder. आप गौर व फिक्र क्यों नहीं करते करके जमीन में चलते फिरते हैं, तो इसमें जमीन में गौर व फिक्र करो, जमीन और आसमान में कैसी बनावट है, चरिंद परिंद में, इसकी दुनिया की पैदा करने में, इंसान के अपने ओन क्रिएशन में, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने दोनों हाथ इक्वल बनाए, दोनों पैर इक्वल बनाए, दोनों आंखों का शेप, दोनों कानों का शेप इक्वल है, हाउ the world is created. It comes from pondering. तो एक आदत डालनी चाहिए हमको कि कैसे हमको करना है. Where can I find coaching centers for ITI courses? I think you are asking for IIT courses. ITI तो मैं जैसे बताया कि इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये तो बिल्कुल मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह के कोर्सेज हैं, प्लम्बिंग हैं वगैरह वगैरह. However, for IITs, there are so many institutes in and around Hyderabad. So there are so many prominent institutes. I don't want to take the names, commercial हो जाएगा वो. तो you can find out. आप गूगल करके देख सकते हैं IIT coaching centers in Hyderabad around me करके. Which field did you took, sir? I am myself a mechanical engineer. So my field is mechanical engineering. CC is good course for job. I think CEC. I think you're asking for CEC, Civics, Economics, and Commerce. See, whatever course you take, it depends on your interest. Like for example, if you go for MPC, BIPC, CEC, HEC, MEC, उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं? Why you are taking CEC? ये आपको clear होना चाहिए ये concept. कि not just because your friend is taking CEC, you will also take CEC. CEC लेने के बाद आप graduation में क्या करेंगे? Do you want to go for BCom, or like for example you want to write civil services, so will it help you in any way? So think about it and then look at the syllabus. CEC, you should know the difference between CEC, MEC, HEC. तो ये तीनों में difference क्या है? Why you want to go for CEC? तो ये मालूम रखा कर लेते हैं तो that is okay. And okay. See, for polytechnic courses with BIPC stream, so far, polytechnic is for students who have passed 10th class. So all students who have passed 10th class, they are eligible to take admission in polytechnic courses. However, if you want to go for intermediate stream and not polytechnic, then you select either MPC or BIPC. So this is a difference between, like for example, these are two options. One is intermediate, the other is polytechnic. If you go for intermediate, you take MPC, BIPC, and if you go for polytechnic, you select any of the branches, like for example, civil, mechanical, electrical, electronics, computer science, artificial intelligence, and so on. There are so many streams of engineering that are available for polytechnic students. I wrote the exam of polytechnic, then after that, what should I take, sir? Okay, so if you have taken PolyCET, then you should probably wait for the results. And then if you are really interested in engineering, by this time you should be convinced about which field you want to take, you want to pursue your studies in. Like for example, इसमें बताना computer science है, civil है, electrical है, electronics है, इसमें से कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप? अगर if you need some assistance, you can contact me also for that. So probably I can guide you for polytechnic courses कि कौन से courses क्या होते हैं. Which branch is better for girls in polytechnic? Okay, see, for girls, usually what I suggest is courses like computer science engineering, artificial intelligence, machine learning, and electronics and communication engineering. Unless some girls, I have seen some girls who are particularly interested in civil or mechanical. So because you know, civil and mechanical, in these courses, girls are few in numbers.
probably because of the hard nature of the work they will be working in their careers. Like for example, civil engineers, they need to go to the sites, visit places and so on. Mechanical engineers, they have to spend a lot of time in probably in manufacturing facilities and so on. So probably this keeps the girls away from these fields, but if they are interested, they can go to these fields. Otherwise, the fields like computer science engineering, artificial intelligence, cyber security, electronics and communication engineering are more suitable for the girls. Which one is better, MPC or BIPC? Very difficult question to answer. Probably nobody can make a decision on your behalf. इसमें आपको ये देखना है कि मैथ्स में आप कैसे थे, 8, 9, 10th में, बायोलॉजी में कैसे थे. If both of them were difficult, then you need to go for some other thing like CEC and or so on. But लेकिन पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है. हर जगह पर you can talk to the parents. अगर आप if you think you cannot do it, अगर you can do जिसमें इंटरेस्ट है आपको, मैथ्स में और बायोलॉजी में, you have to decide. This is the right time to decide. आप रख के देखिए और फिर उसके बाद का एक स्टेप आगे बढ़कर देखिए कि मैंने ग्रेजुएशन में आप क्या करना चाहते हैं. एमपीसी लेंगे तो ग्रेजुएशन में क्या करेंगे, बाईपीसी लेंगे तो ग्रेजुएशन में क्या करेंगे. Sir, please give insight for Pharma D after intermediate. Okay, I think for intermediate, after intermediate, we are going to have a separate session for that. But anyhow, because you have asked the question, it is a very good option for students who have written NEET, but who think that it is difficult for them to get to qualify NEET and to get within the cutoff marks. So Pharma D is a promising field. It has got good scopes in India and abroad, all places. So you can think about pursuing a career in Pharma D. What about my question? आपका question क्या था? I don't know. ऊपर जाना पड़ेगा. I want to take CEC, sir. So after that, I want to join in BCom. So after that, what I can go for? हाँ, मतलब यही है कि मैंने आप CEC लेंगे तो definitely the only option that you will have is to go for BCom or BA. तो उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं वो that is what you need to decide now. कि आप बीकॉम करेंगे तो उसके बाद whether you want to go for civil services examination, group 1 examination, group 2 examination, या फिर एमकॉम करेंगे, उसके बाद टीचिंग में आएंगे, what do you want to do? या बीकॉम करने के बाद बीएड करेंगे. You have to be very clear. आप यहाँ पर ये सेशन है इसीलिए कि to make you think. आपको सोचना है. See, मैं आप सबके लिए ये डिसाइड नहीं कर सकता कि all of you go for medical field, all of you become doctors. No, this is not the nobody can do it for you. So आप it is you who will decide what is good for you. If you want to take CEC, why you want to take CEC? Maybe you are clear for it. कि आपको क्लियर है कि क्यों लेना चाहते हैं. CEC के बाद ऑप्शन आपके पास बीकॉम है. नेचुरली बीकॉम करने के बाद क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है कि मैंने आप you want to stay in India or abroad. For example, usually girls get married after BCom. तो उसके बाद अगर करना हो तो क्या कर सकेंगे. तो getting a degree is preferable for all the girls. तो उसमें आगे कभी काम आता है. तो जॉब भी कर सकते हैं, नहीं जरूरत पड़े तो नहीं भी कर सकते हैं. तो that will keep an option open for them. Is it good for girls? क्या है भाई? Is it good for girls? I don't know. हाँ, Pharma D is, yes, of course it is good for girls. Boys के लिए भी अच्छा है, girls के लिए भी अच्छा है, and it has got good career options. In MPC, I got is 26,695, and in MYPC rank I got is 43,000. Okay, very good. MPC का rank तो बहुत अच्छा है. 26,695 is a good rank. And if I take CEC group in Inter for police coaching, is it right group for that? See, जो ये पुलिस कोचिंग के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इसमें they usually go for either say SSC or intermediate. They as far as I know, they don't look for ये ग्रुप्स कौन से हैं वो नहीं देखते. माने जो बेसिक ये पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम्स होते हैं, तो I think they only look for intermediate. If at all they are looking for intermediate, they don't. I don't think they see for these courses. ये उसके स्पेशलाइजेशन में देते.
My daughter passed with 99%. Mashallah, बहुत अच्छी बात है. Girls getting so much good percentage of marks. Mashallah. अल्लाह ताला आगे भी कामयाब करे तमाम लड़कियों को. Sir, by taking M by PC, can we do medicine for becoming doctor like MBBS? Yes. M by PC लेने से the life will be very difficult in intermediate. बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगी. Maths भी पढ़ना पड़ेगा, biology भी पढ़ना पड़ेगा, and then you can write for engineering entrance also, and at the same time you can write NEET also. दोनों भी लिख सकते हैं आप. You will have आपको सोचने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा आपको. यू विल हैव ए ब्रीदिंग टाइम, क्योंकि असल में ऐसा होता है कि 10th क्लास तक हमको ये पढ़ाया नहीं जाता कि हमको डिसीजन लेना है अपने करियर के बारे में 10th क्लास में. तो सडनली आप इस तरह का लेक्चर सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमको टाइम बहुत कम है. तो अगर आपके पास अब वक्त कम है तो 1-2 साल का वक्त मिलता है आपको for only for few serious students के those who have not yet decided whether to go for engineering or medicine, and those who have got more than 95% marks. जिनके मार्क्स कम है, they have to decide about one career option at this moment and then proceed with that. What can become by choosing MPC? MPC करने के बाद naturally you will go for engineering, but some other options will also be open for you. तो वो उसके कुछ और ऑप्शंस भी ओपन हो रह सकते हैं, जैसे लॉ कर सकते हैं और दूसरे कई ऑप्शंस में आप जा सकते हैं. Usually students go for engineering after MPC. Okay, sir, by taking M by PC, can we do medicine like MBBS? Yeah, इसको मैं आंसर दे दिया हूँ मैंने. You can do medicine also. I am by PC Urdu medium student. What can I prefer next? अच्छा, I want to continue in English. You can continue. कोई उसमें उर्दू मीडियम से रहने से ऐसा थोड़ी है कि मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा एडमिशन. You can continue your graduation in English medium, no problem. For becoming doctor, sir, medical field or an alima, like I'm confused because these things isn't that by choosing by PC I could also understand Quran Sharif. See, दोनों fields बहुत अच्छे हैं, but the thing is, if you are getting a chance in medical field, like for example, if you're getting admission into a medical college, go for medical college, and then you can do alima course anytime in your life. Getting admission into an alima course is open for you, is available. It is not that competitive, and it is available to you for the rest of your life. But doing medicine will only be possible at this age. While ये जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग कुरान शरीफ का ताल्लुक है, वो you can start doing it on a regular basis while you are studying anything, like you are doing medicine, you are doing engineering. कुरान समझना और पढ़ना हम सब के लिए जरूरी है, ये शुरू हो जाना चाहिए साथ में. What can I do by taking M by PC? मैं बताया ना, दोनों भी आपके पास ऑप्शन ओपन रहेगा. मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा. Only girls who are having good percentage go for M by PC, otherwise it is not advisable for others. What I can, okay, sir, is Pharma D better option in today's time, and what is its scope? What are polytechnic courses for by PC? What are by PC stream courses in polytechnic? Few questions from participants. मैं इसके already answer दे चुका हूँ. D Pharma courses has a better scope these days. It is better than B Pharma. And polytechnic course for BPC, मैं बताया कि 10th class के बाद polytechnic होता है, तो there is no question of BPC for polytechnic. दोनों parallel courses हैं. और BPC stream courses, BPC stream के courses कोई polytechnic पे नहीं होते. What is better to do, sir, by taking PC, sir? What we should do after pursuing degree? Like which field is good for girl? वो आपकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा. डिग्री आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. इंटरेस्ट आप जो अच्छा करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मैथ, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, किस में आप वो है. और जो भी डिग्री करना है, ट्राई टू बी मास्टर एंड परफेक्ट इन दैट फील्ड, देन जॉब्स विल कम रनिंग टू यू. by taking MPC, can we do medicine, sir? हो गया है, please
I'm having a very big confusion. मैं बता दिया कई बार इसका आंसर दे चुका हूँ मैं. By taking MBBC, can we become a doctor? Yes, you can become a doctor. To become a lawyer after CEC, what can we go for? After doing intermediate, you apply for LLB. There is an entrance for that. You can get admission in it. And I'm Naba, member GR Malapit. I have finished my 10th. I want to become Alin, but with that, I also want to have a proper degree. So which field I could choose? मैं अभी वही बता रहा था कि go for a माने आप 11th-12th में आपको जिसमें इंटरेस्ट है, मैथ्स में या फिर बायोलॉजी में या फिर कॉमर्स में, जिसमें भी इंटरेस्ट है, you take a course and then in the part time, in the evening time, you can do the Alima course. आलिमा कोर्स करने के लिए आपको फुल टाइम रहने की जरूरत नहीं है. देयर आर सो मेनी प्लेसेस, मलकपेट में भी है और कई जगहों पर है जहां पर आलिमा कोर्स शाम में किया जा सकता है. इट इज ए बिग कोर्स, माने 5 साल का कोर्स है वो. आप रोजाना शाम में 2 घंटे 3 घंटे का कोर्स होता है वो, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, आपके 2 साल इंटरमीडिएट के और 3 साल ग्रेजुएशन के, ये 5 साल में आप आलिमा भी बन जाएंगे और आपके पास ये डिग्री भी आ जाएगी. What are the BPC stream courses in polytechnic? Sir, what is the best to take after NPC? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम. अपॉलॉजीज वक्त की कमी की तरफ से ये एक लास्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए. जज़ाकल्लाह. Right. ठीक है, procedure. What is the procedure for IAS and how we should prepare for it? अगर IAS के लिए कोई जाना चाहते हैं तो वो अभी से इंटरमीडिएट से अपना जहन बनाएं और फिर then you select appropriate field in intermediate and degree जिसमें they want to write the IAS examination. IAS examination में होता है कि you have to select a particular field. People go for BA with political science, public administration. ये easy माना जाता है उसमें compared to rest of the courses. लेकिन इसमें भी अब आजकल competition tough है, तो ऐसे select करिए आप जो IAS academies हैं, वहां पर जाकर मालूम करिए कि मैंने I am interested in IAS, but you should have the potential. आपका अभी तक academic career अच्छा strong होना चाहिए. You need to have a dedication कि मैं आइंदा 4-5 साल तक इसमें मेहनत करूंगी. तो आप अगर इतना कैरियर अभी तक रिकॉर्ड अच्छा है और आगे का डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, फैमिली सपोर्ट है, then you go and meet some IAS academy and then they will guide you to which courses will be good for you to do that, to go for IAS. I think with this I'll stop here. Jazakumullahu khairan. Yes, I am done. मेरी तरफ से हो गया है. जज़ाकल्लाह खैर सर. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर आवर गेस्ट स्पीकर जनाब रज़ा अहमद खान साहब फॉर हेल्पिंग अस डिसाइफर द वेरियस एकेडमिक एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट वी कैन अवेल ऑफ. प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं आप सबको गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना का एक मुख्तसर सा तारुफ दी चलूँ. Girls Islamic Organization is a platform for girls, young women, and female students in India to prepare them for the reconstruction of society in the divine light of guidance. हमारे मकासद में शामिल है कि लड़कियां माशरे में अपनी जिम्मेदारी, मकाम और उनके ऊपर आयद जिम्मेदारियों को पहचानें और उन्हें अहसन तरीके से अंजाम देने के काबिल हो जाएं. The main nature of GIO is to function girls on the ground of Islam. Girls should have the courage to shoulder the responsibility of handing over the message of truth to the posterity. GIO लड़कियों के क्रिएटिव टैलेंट्स की हौसला अफजाई करती है और आपको खास अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है फॉर ऑल राउंड पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू आवर वेरियस प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज. Our activities include weekly programs, monthly tarbiyah programs, summer camps, various campaigns, sports tournaments, self-development workshops.
Quranic workshops, career guidance programs, pre- and post-marital counselings, and various other programs. Thank you all for joining. Hope you all have benefited from this program. In conclusion, I'd like to make a dua. Allah subhanahu wa ta'ala say, may Allah subhanahu wa ta'ala prosper our youth's future, blossom them into marvelous assets for the Ummah. Ameen. Our next career guidance session will be held for intermediate pass-out students, inshallah. So stay tuned through our social media handles. Jazakallah khair.